Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will learn computer and its basic operation. Computer and its basic operation. As we know that computer is an electronic machine, it accepts data from user, store that data, and process. After processing, computer gives us result. कंप्यूटर दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से डेटा इंस्ट्रक्शन लेता है। यूज़र के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उस डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और यूज़र को रिजल्ट देता है। कंप्यूटर का मतलब है टू कंप्यूट, मीन टू कैलकुलेट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। A computer is an electronic machine that accepts data, store data, process the data according to the instruction provided by the user, and finally returns the result to the user in the form of output. मेन मकसद भी कंप्यूटर का क्या है? टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट, टू प्रोसेस डेटा according to the user instruction. The computer can do all these operations with very high speed as compared to human. बिल्कुल कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है ह्यूमन के मुताबिक। ह्यूमन के साथ अगर हम इंसान के साथ इसकी कंपैरिजन करें स्पीड की, तो कंप्यूटर जो काम सेकंड में करता है वो एक इंसान उसको मिनट में या 10 मिनट में कर सकता है। ऑल कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक इन ऑपरेशंस: इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। टू कैरी आउट एनी टास्क, जितने भी काम करता है तो वो इन ऑपरेशन के ज़रिए कोई भी काम कर सकता है। द फर्स्ट इज़ इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें कंप्यूटर डेटा लेता है फ्रॉम यूज़र, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है, वो मरहला है जिसमें कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट करता है। It is the process of capturing or accepting data or information by using input devices. Yes, input devices are used to accept data. Through input devices, user can enter data. The input devices are keyboard, mouse, joystick, light pen. Processing operation. When the data is entered into computer, then the second operation is processing. Data is stored and central processing unit is responsible to perform processing on the given data. To process the data, the CPU stores the program instruction and data in the computer's memory. बिल्कुल कंप्यूटर मेमोरी में पहले वो स्टोर होगा, तब CPU उसको प्रोसेस कर सकेगा। Where it is directly accessible for processing, जहाँ से CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। This diagram shows the basic operation of every computer system. Storage operation है, यहाँ पे input operation है, output operation है. Input devices like keyboard, mouse, joystick, these are used to do input operation. इनके ज़रिए input operation होती है, डेटा कंप्यूटर को सेंड किया जाता है, एंटर होता है। उसके बाद डेटा को स्टोर किया जाता है जिसको कहते हैं स्टोरेज ऑपरेशन। वो ऑपरेशन जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है उसको कहते हैं स्टोरेज ऑपरेशन। एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर रैम, रोम, secondary storage devices. There are two types of storage devices: primary storage devices and secondary storage devices. उसके बाद the data and instruction is processed by the CPU, central processing unit. So control unit is responsible to give directions to the arithmetic logic unit, and arithmetic logic unit will perform addition, subtraction, multiplication and also comparison operation. Then after processing, the result is ready. Result is sent to the output device for output operation. Output operation.
It is the result which comes from the transformation process, or it is the outcome of the processing. The monitor shows the result of processing operation on the screen. जो भी processing हो जाती है डेटा पर तो उसको स्क्रीन पर दिखाया जाता है या उसकी प्रिंट आउट निकाली जाती है या स्पीकर के ज़रिए उसको सुना जाता है. स्टोरेज ऑपरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा. ये वो प्रोसेस है, ये वो मरहला है जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्टोरेज ऑपरेशन, सो दैट द यूज़र कैन रिटेन एंड रिट्रीव it whenever required. Computer data storage is referred to as storage or memory which can save digital data. Digital means 0 1 फॉर्म में ये डेटा को स्टोर करता है. Now what are the devices for storage operation? RAM, hard disk or removable memory stick. These are the storage devices for storage operation.